We had a few questions coming in. Parul ji के भी question थे, and we had a few more questions coming in. We'll take those questions, but I think आज हम लोग साधन पद खत्म कर पाएंगे. Not much is left, और कुछ बहुत नहीं बचा है. So let's first finish that off, and then we will look at the. कर दिया मैंने शुरू. तो हमने 43rd तक किया था. तपस्या के द्वारा अशुद्धियों का नाश हो जाने से शरीर और इंद्रियों में अनेकों प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं. अब कितने बचे हैं? 52, 11 और सूत्र बचे हैं दूसरे भाग में, साधन पाद में, और हम लोग 44वें पर हैं. पतंजलि कहते हैं मंत्र जप के अभ्यास से इष्ट देवता का दर्शन होता है. एक मिनट, नहीं, मंत्र जप नहीं है. स्वाध्याय अधि इष्ट देवता संप्रयोग. स्वाध्याय के अभ्यास से इष्ट देवता का दर्शन होता है. इतना ट्रांसलेशन में भसड़ रहता है ना. मैं देख रही थी इस बार इसमें भी जो अनुवाद किए गए हैं वो इतने कहीं से भी शब्द उठा के ले लिए हैं. तो स्वाध्याय करने से इष्ट देवता के दर्शन होते हैं. तो दो महत्वपूर्ण शब्द, स्वाध्याय माने क्या और इष्ट देवता माने क्या. और दर्शन तो हम जानते हैं, दिख जाना. जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, जो ईस्ट का दर्शन है, वो पूरा दर्शन पर ही बेस्ड है. वी डू नॉट टॉक ऑफ हियरिंग द लॉर्ड, वी डू नॉट टॉक ऑफ टचिंग द गॉड, और सो वी टॉक ऑफ ऑलवेज दर्शन. दर्शन हमारे पूरे आध्यात्मिक तंत्र का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है. तो स्वाध्याय माने क्या? स्वाध्याय में किसका क्या पढ़ेंगे? हम स्वयं पढ़ेंगे, पर हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए हमारे पास दो एंटिटीज होते हैं. पहला एंटिटी है बाह्य जगत, द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसके बारे में पूरी साइकोलॉजी पढ़ती है, जो साइंस पढ़ती है. इट्स ऑल ऑब्जेक्ट सेंट्रिक, इट्स ऑल अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड. पर क्या अध्यात्म भी उसी स्टडी की बात करता है? नहीं, अध्यात्म करता है study the one who is studying all this. So spirituality is not concerned about the prakriti, the variety, all that we see. जो कुछ भी हमको, जो दृश्य है, जो कुछ भी हम देखते हैं, अध्यात्म का उससे कोई लेना देना नहीं है. अध्यात्म कहता है कि ये सब देखता है, बाह्य जगत को देखता है, जानता है, सुनता है, समझता है, अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, वो कौन है, उसको जानो. तो जो पूरा स्वाध्याय है वो उसी में सिमटा हुआ है. स्वाध्याय इज लुकिंग एट द सेल्फ. सो देन द क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी लुक एट द सेल्फ? इनफैक्ट अगर आप आत्म साक्षात्कार की यात्रा की शुरुआत करते हैं, उसका आरंभ करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम क्या ऑब्जर्व करें. व्हाट इज द सेल्फ ऑब्जर्वेशन? सो वी बिगिन बाय ऑब्जर्विंग our emotions, our thoughts and our reactions. ये ही अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है कि जीवन निकल जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि हमारे रिएक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, हमारे इमोशंस के केंद्र क्या है, कौन सी बात ट्रिगर कर रही है, क्यों हम रिएक्ट कर रहे हैं, या हम कुछ भी महसूस करते हैं तो क्यों महसूस करते हैं. ये जो अहम भाव है, जो कुछ भी महसूस कराता है, वो क्यों महसूस कराता है. देखिए, इतने वर्षों से मैं इसमें हूँ. आपको बहुत एग्जाम्पल देती हूँ. मेरी विद्या से बात भी हो रही थी, विद्या जी से, कि yesterday was my parents' 50th wedding anniversary. So there was a small gathering, and of course that was it was me and my sister who had arranged for entire thing. But it did not
went the way we expected. So we did not go very exorbitant. We were little कंजूस, आप कह सकते हो, थोड़ा मिनिमलिस्टिक व्यू है. तो we but wanted a small gathering, and as it is we were not more than 30 people, 31 31 लोग थे. तो हमने रेस्टोरेंट का एक सेक्शन बुक किया था, and we thought we will be able to have good interaction with each other. Unfortunately उस रेस्टोरेंट का जो सेटअप है वो अलाउ नहीं किया, and जिस एक्सटेंट का पर्सनल टच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाया. एज इट इज वी ऑल मेट आफ्टर लॉन्ग, सो and in my family there's a lot of dance gana stuff, so all those things could not happen. So elders were especially, they were a little upset. So my sister was very upset because um, she felt that these are one time occasions, and it should happen in a way that people remember and all that. And for me that was a learning experience. I said yes, the choice of venue could have been much better. This was not the most appropriate venue, and we came by our um, uh, perception. Maybe we thought they will be making such an arrangement, they did not, and all that. It took me time to come out of that syndrome that it's okay, you got to leave it. Although verbally I was saying this to myself, मैं शब्दों में बोल रही थी, अपने आप को बार बार स्मरण दिला रही थी कि आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है जो हो गया सो हो गया, आप उसमें लटक नहीं सकते हैं. इसको आप समझ जाइए कि अगर आपको आगे से कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे करना है, और इसके बाद यही बात खत्म होती है. लेकिन फिर भी मुझे समय लगा इसको एज अ बाइगॉन ट्रीट करने में. आई हैड टू sit in silence and had to watch the emotions, and had to question who is getting hurt, or who is feeling annoyed, or who is feeling, and then catch that, and then kind of go beyond that, get rid of that. It was an exercise for me. It was an exercise for me. So it is not easy. If it really happens easily for you, I would say you are blessed. It was not easy, and that is why इंट्रोस्पेक्शन इतनी आसानी से नहीं होता है. कहना बहुत आसान है that you watch your thoughts, you watch your actions, पर हम उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते. इंटेंगलमेंट, अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है, वो अहम भाव कि मैंने ऑर्गेनाइज किया और लोग कितने प्रसन्न होकर के गए और कितना वाह वाह करते गए और कब तक याद करेंगे. ये सब बातें इस तरीके से दिमाग में घूमने लगती है, और अगर आपके दिमाग में नहीं भी घूमेंगी तो यू हैव पीपल अराउंड यू हु विल रिमाइंड यू. इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो अहंकार इतना रोल प्ले कर रहा होता है हर समय टू कैच इट, दैट इट इज प्लेइंग रोल. I would really say it's not an easy task. It's not an easy task. It takes time and it demands एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए. We need to have volition for that. कि ये बैठ के करना है, इसको मैं छोड़ दूं, I ignore it, very possible. But if I'll ignore it, वो कहीं कोने में पड़ा रहेगा, and it will just come out at some occasion if I have not watched it enough and sorted it out within myself. तो स्वाध्याय इसीलिए इतना आसान नहीं होता है. खुद का स्व का अध्ययन, यहाँ पे स्वाध्याय is not self study, it is study of self. To be aware of the emotional turbulences, even the positive ones, the excitement and those things, and being grounded, being all right, knowing, having that witnessing, वो दृष्टा एक पीछे खड़ा रहे जो देखे. ये इतना सरल नहीं होता है. और इष्ट देवता क्या है? इष्ट देवता है वो ही जिसको हम कहते हैं कि हम सबके भीतर बैठा हुआ है, ब्रह्म. विद्या से
It is my toughest limb to abide by. Lifetime work, lifetime commitment for me. हम सबका lifetime commitment ही है. It doesn't come so easily. So Ishta Devta is that God that is within us. So when we are able to penetrate ourselves, और हम अपने उस ढांचे के बियॉन्ड जाते हैं जो शरीर और मन के तल का है, क्योंकि इमोशंस वगैरह सब तो शारीरिक ही है ना, दे आर ऑल हार्मोनल स्टफ. तो उसके आगे moment by moment, how we forget so easily. We forget so easily because we do not ensure a process of remembrance. That takes time. You know, they say that if you do not fill your life with useful things, your life will automatically be filled with useless things. So to fill your life with useful things is your job. You will have to do it. It's an effort. Useless तो अपने आप ही होगा. जब पकड़ के अपने आप को यूजफुल के पास लाओगे तो आप यूजलेस से अपने आप को छुड़ाओगे. सिर्फ यूजलेस के साथ फाइट करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर यूजफुल का कुछ मालूम ही नहीं है तो अंततः यूजलेस में फंसोगे. बोलोगे मैं करूं क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. What do I do? Where do I go? How do I spend my time? And then that useless stuff will start rotating in the mind. तो इस बात का पता होना कि यूजफुल क्या है. अब आप चाहे उसका टू डू लिस्ट बना लो, चाहे लिख के कहीं चिपका लो, चाहे अलार्म क्लॉक में उसको फीड कर दो. I have changed my ringtone to one of the bhajan. I said वो अनबंड चीज रिमाइंड करे, इससे अच्छा कि लेट दी भजन. एंड नाउ इट्स लाइक अगर बैठी हो ना तो ऑटोमेटिकली इट्स अ दुर्गा स्तुति, इट ऑटोमेटिकली रिंग्स. It's better than the rubbish stuff in the mind. If the mind cannot be in the Brahma, it's better that it be in those things than the rubbish. So one has to figure out ways to remember. और ये सब स्वाध्याय में टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं. तो इष्ट देवता का दर्शन प्राप्त होता है. एंड व्हेन यू go beyond all your tendencies, you reach your mother tendency, जैसे महर्षि रमन कहते हैं I tendency है the ego, the very source of everything. आप जब वहां पहुंचते हैं और आप उसके पार जा पाते हैं, अहम का डिसोल्यूशन होता है, अहम गायब होता है, विगलन होता है उसका, तब जिसे हम प्राप्त करते हैं उसे आप इष्ट देव कह ले. तो पतंजलि उसी की ओर इंगित कर रहे हैं. इसके बाद पतंजलि कहते हैं समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्राणिधानात्. ईश्वर प्राणिधान के द्वारा समाधि प्राप्त होती है. हमने देखा था ईश्वर प्राणिधान का क्या अर्थ है. टू सरेंडर योरसेल्फ. अब आपको जब इष्ट देवता का ज्ञान हो गया है, then the next job is surrender yourself there. Surrender ego there. Let that take over. Let gratitude take over. Let the knowing of all that happens is the right thing for me at this moment take over. And so despite all my efforts, if what has happened doesn't seem to be right, वो जैसे हमारे वो दो प्रिंसिपल है ना, रूल नंबर नौकरी के दो नियम. रूल नंबर 1 is boss is always right. रूल नंबर 2 is when boss is wrong, refer to rule number 1. ये बिल्कुल वैसे ही है. There are 2 rules. Whatever has happened is the best for me at that moment. And rule number 2 is
If I think what has happened is not appropriate, not right for me, refer to rule number 1. एकदम वैसा है. तो सरेंडर टू गॉड. और गॉड क्या है, ये वहां तक पहुंचने के बाद हम शायद जिसको अभी ईश्वर कहते हैं वो कुछ और ही स्वरूप हमें समझ आए. वहीं पर ब्रह्म के कुछ झलकियां हमें मिले शायद. तो उसके द्वारा समाधि प्राप्त होती है. समाधि क्या है, हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं. समाधि इज समाधान. इट इज who asks questions. To ask a question, there has to be a questioner always. And in surrender, the questioner dissolves. When the questioner dissolves, no question remains. And that is the solution. The solution is never that you get solution for everything. Because whatsoever solution you get, मन इतना चालाक है, माया इतनी चालाक है, उसके इतने पैने पंजे हैं कि वो आपको एक सॉल्यूशन आप दिखाएंगे, उसको काट के दूसरा प्रश्न खड़ा कर देगी, उसको काट के तीसरा खड़ा कर देगी, और ये श्रृंखला चलती जाएगी चलती जाएगी. तो समाधान का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि हमको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए. ये असंभव है. समाधान का इतना ही अर्थ होता है कि प्रश्न ही नहीं उठ रहे, अब प्रश्न ही नहीं बचे. और एक स्टेप और पीछे जाएंगे तो प्रश्न क्यों नहीं बचे? क्योंकि प्रश्न करने वाला नहीं बचा, प्रश्न करता नहीं बचा. और प्रश्न करने वाला कौन है? अहंकार है. तो वो नहीं बचा और इसलिए समाधान की प्राप्ति. इसके बाद पतंजलि कहते हैं, अब आसन की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने यम नियम की तो बात कर ली, अब हम तीसरे चरण में आ रहे हैं जो है आसन. आसन के विषय में पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम. आसन वो है जिसमें आप सुखपूर्वक स्थिरता से रह सकें. आसन वो है जिसमें हम बिना हिले डुले स्थिरता से बहुत देर तक रह सकें. ये कब होगा? याद होगा हम लोगों ने, मैंने ताओ ते चिंग का कई बार जिक्र किया है. लाओ त्सु ने कहा है, when the shoe is right, the foot is forgotten. हम कहीं जाते हैं और हमें इस बात का यदि ख्याल रहता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, then you know that there is something wrong with it. But the moment you forget कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, all that, you come in certain kind of ease. Then there is certain kind of ease. आप किसी दिन बहुत कसे हुए कपड़े पहन के बाहर निकलिए, आप जब शाम को आएंगे और कपड़े बदलेंगे तो देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होता है. So the entire day, the clothes had been reminding that, hey, it is little. आप कह सकते हैं आभा, yes, it is about not being able to be one with the surrounding. And yes, in certain way, हमारा शरीर भी तो सराउंडिंग ही है हमारा. So उस दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है. हम शरीर को अपना मान क्यों लेते हैं? क्योंकि इसी के द्वारा, अभी I was going through something and I was talking to somebody and we're talking of the exercise of watching yourself in the mirror. And it was like, मैं आईने में अपने चेहरे को देखती हूँ, मैं अपना चेहरा कभी नहीं देख सकती. None of us can look at our own face. How do we know that we look like this? Because anywhere that we see, the reflection that we receive is the same. And that is what makes us infer that this is how we look.
एंड देन वी गेट सो अटैच्ड टू आवर फेस, एंड कितना प्यार आने लगता है हमको अपने चेहरे पे, और हम उसकी कितनी सेवा करते हैं, कितनी देखभाल करते हैं, एक पिंपल एंड ऑल दैट. बट इमेजिन, हमको हमारा चेहरा ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि वो यही रिफ्लेक्शन हमको दिखाता है. हमारे ब्रेन में जो कलर का कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे ब्रेन में जो 3D का कॉन्फ़िगरेशन है, all that together comes to give this reflection. Does the dog also perceive me in the same way? Does the bird also perceive me in the same way? Does the ant also sees me in the same way? No, because their configuration of the brain is different. तो हम जिस चेहरे को अपना कहते हैं, जिस चेहरे के साथ इतना लगाव हो जाता है, हमको तो पता ही नहीं है एक्चुअली कि हमारा चेहरा है कैसा. एंड आई वाज वंडरिंग कि ये कैसा गजब सा है. एंड this was there was this video by Swami Sarvapriyananda ji only, when he had given this exercise that you get into the mirror and see who you are. And that is wherein clicked to me, my God, जिसको मैं अपना चेहरा बोलती हूँ और बोलती हूँ कि वो ऐसा दिखता है और वैसा दिखता है, वी गेट इनटू कॉम्प्लेक्स कि हमारी आंख छोटी है और होंठ मोटे हैं और पता नहीं क्या क्या. हमको तो वाकई पता नहीं है कि वो है कैसा, और हम कितने कॉन्फिडेंट होते हैं इन बातों को लेके. सहज सी बात है कि हम स्थिर नहीं हैं, आसन में नहीं हैं. We are not in the state of easiness. So when the shoe is right, the foot is forgotten. In exactly the same way, when you forget your body, your physical existence, which is the state of asan or posture, that exactly is the right asan. So that posture which allows you to forget your body is what is called as asan. And so the asan can be different for different people. One will have to find out. It is यहाँ पे भी वो आसन नहीं है बिल्कुल जो हम योगासनों में भी बात करते हैं. ये वो आसन नहीं है. आसन वो है जहां हम स्थिर रूप में बैठ सकें. तो इसके आगे कहते हैं पतंजलि, प्रयत्न शैथिल्य. ये बहुत 4-5 शब्द है जिनका संधि किया हुआ है. प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्तिभ्याम. शैथिल्यान का मतलब होता है to become effortless or relaxed in even making effort. So when you are making effort, then also the feeling of effort is not there. ये आसन है. सामने वाले को लग सकता है कि आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो. आई रिमेम्बर कई बार ऐसा होता था, मैं सोफे में सो गई ऐसे ही कुछ पढ़ते पढ़ते या बेड पे कुछ देखते देखते सरक गई, एंड टू द व्यूअर माय पोस्चर इज वेरी इनकन्वीनियंट. वो ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे सो सकती है, हाउ कैन शी बी कंफर्टेबल स्लीपिंग लाइक दिस. पैर ऐसे मुड़े हुए हैं, हाथ ऐसे दबी हुई है, तकिया यहाँ है, तकिया है ही नहीं, etc etc. For me at that moment, that's the best posture. And when I am said that why don't you sleep properly, and that moment my sleep goes away, and I have been very angry. मुझे ऐसे ही आराम था ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. तो ये बहुत ही मजेदार बात है कि जब हम एफर्ट का त्याग कर देते हैं, सो इट बिकम्स एफर्टलेस. एंड वो एफर्टलेस कब होता है? वो भी तब होता है जब हम विल पावर का भी त्याग करते हैं. जो
हमारा पूरा विल पावर का गेम है, उसमें तो पूरा माइंड इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप सोने जाते हैं, आप जब तक कोशिश करते हैं नींद नहीं आती है। जिस क्षण कोशिश ड्रॉप होती है, नींद आनी शुरू हो जाती है। आप जितना कोशिश करेंगे नींद उतनी दूर जाएगी। Efforts have to be dropped. So coming back to the childlike state, being very natural, being very connected to the, जिसको हम कहते हैं ना कि प्रकृतिस्थ, being very rooted in that, wherein you let your body be that of those 5 elements, and it is it, that's it. So being in that state, and then Ananta Samaptibhyam, meditating on the unlimited. So these are two things. So when you in your effortless, relaxed state meditate on the unlimited, that is the asana state. In fact, that is what asana should allow you to do. The right asana, how would you know that I am in the right asana or not? The way to know about the right asana is, you are not putting in any effort. You are very easy. There is no restlessness, and you are able to meditate on unlimited. Now, meditating on unlimited, what does that mean? मन के लिए अनलिमिटेड शब्द भी जो है ना, वो बहुत दूर जाके एक पेरिफेरी खींचेगा, पर वो एक लिमिटेशन बनाएगा. So, because माइंड की जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो लिमिटेड है. बिना लिमिटेशन के मन का अस्तित्व ही नहीं है. माइंड कैनॉट एग्जिस्ट. You think anything and you just check. You can have this much of boundary, 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 but there will be boundary. This is how mind is. So meditating on unlimited is again an indication by Patanjali, wherein he's saying drop the mind. You cannot cognize unlimited. How will you meditate on unlimited? So all that he's trying to say is, drop that limitedness which is coming to you. So let it be blank. Let it be like a black hole. Get absorbed in it. Get totally absorbed in that. Do not pick up things to meditate. And then he says in 49th, Tasmin sati shwasa prashas yogar yoga gati vichedha pranayama. आसन में सिद्ध हो जाने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने को प्राणायाम कहते हैं. सो यम नियम आसन प्राणायाम चौथे के बारे में कह रहे हैं. अष्टांग जो 8 लिम्ब है, उसका चौथा लिम्ब. Breath is a very physical thing. Rather, breath is the only thing which they say that it has the capability of connecting us to the unlimited. आप अगर प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो सांस लेना एक बात होती है और छोड़ना एक बात होती है. In breathing, in inhaling and exhaling, there lies a gap. So it is not inhalation and exhalation. It is rather a 4-step process. Inhale, stop, exhale, stop. This stopping is of
huge consequence. That is what matters. It is not really the inhalation and the exhalation. Of course, that is important, because when you inhale to your belly, normally we only breathe to the chest. When we breathe, our chest expands, not the belly. If you have been attentive enough, observant enough, you would have ये ना आभा, कुंभक और रेचक दो शब्द हैं, एक में यू आर फुल बेली, एक में यू आर एम्प्टी बेली. अब वो दोनों में से कौन सा क्या है, वो मुझे मुझे जहां तक याद आता है, कुंभक इज यू हैव ब्रेथ इन एंड ब्रीथिंग इन, यू आर होल्डिंग दैट, सो फुल ऑफ इट. उसको पूर्णता के साथ भी कनोट किया जाता है श्वास की भाषा में. और व्हेन यू एक्सपेल आउट एम्प्टी स्टमक, देन उसको रेचक के साथ ये किया जाता है. बट यहाँ पर हमारे लिए प्रोसेस नहीं इंपॉर्टेंट है. क्यों पतंजलि कह रहे हैं इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को नियंत्रित करने को प्राणायाम कहते हैं, प्राणों का आयाम? बिकॉज breath is that which has the capability to connect us to beyond, or rather this is the space wherein we can become most observant. You see, in any emotional state, if you are depressed, your breathing pattern is different. If you are angry, your breathing pattern is different. If you are happy, your breathing pattern is different. Every time you just see, when there is stress, the breathing pattern is different. Breath is that connects our body and our mind. And because we are many times not able to work upon Turiyam, ye nahi hai. Turiya is the fourth, that is beyond. So when you look at your breath, you also start to regulate emotions. If you can become conscious of your breath when you are angry, or when you are stressed, or when you are feeling lethargic. Just altering the breathing pattern has huge impact on our body and our mind, the way we think. And then there is a distinction of the types of pranayama. So in the process of doing, based on the process of doing, there are three types of pranayama. There is बाह्य वृत्ति, जो 50वां सूत्र कहता है, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ. बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म. तो देश काल और संख्या के द्वारा, how you alter, दीर्घ is long and सूक्ष्म is subtle. So, and how many breath in 1 minute, so how your cycle is. So when you start working with this, it opens up a different world for you. But then the only challenge is one has to be consistent with it. We can't expect to do it one day and think that it will open up the, जैसे हम शरीर के 3 तल की बात करते हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है. आप श्वास के को नियमित करके वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक नियमित अभ्यास की आवश्यकता है, not just one day. So those people who are looking for हम क्या करें, this is another tips from Patanjali, that this is what you can do. You can sit in asana, and asana does not mean in the lotus posture, in the cross-legged posture, and look at your breath. इसके बाद कहते हैं हमारा सूत्र छूट गया, 57 के बाद 58 हम जंप ही कर गए.
that is tato dvanda anibhigyatah. 47 में पतंजलि कह रहे थे एफर्टलेस रिलैक्स्ड मेडिटेशन ऑन अनलिमिटेड, और उसके बाद कहते हैं कि जब हम ये कर पाते हैं देन जो डुअलिटीज हैं, जो द्वैत हैं और द्वैत के जो द्वंद्व होते हैं, वो हमारे मेडिटेटिवनेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करते हैं. they are not able to create obstruction. और उसके बाद फिर वो आसन सिद्ध हो जाने की बात करते हैं. Then he says that बाह्य अभियंतर विषय शेपी चतुर्थः. So now he has already talked of 3 types, which is बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति. Now he is talking of the 4th type, wherein he is talking, now these 3, bahya, abhyantar and stambha, these are internal way of doing pranayam. He is giving a 4th way of doing pranayam, which is you are thinking or meditating upon some external object. Bahar ke, sorry, not just external or internal. So paying attention to the external or internal object and looking at your breathing pattern. So this is the 4th type of meditation that he is talking of. Now this is something that one has to practice and see what happens. I tried figuring out, but I've not been able to decipher beyond this on this, क्योंकि ये मेरे प्रयोग में तो नहीं है फिलहाल. 52वें सूत्र में कहते हैं पतंजलि ततः शीयते प्रकाश वर्णम. इससे क्या होता है? What will this do? शीयते, it will take away. प्रकाश वर्णम, प्रकाश आवरणम, जो प्रकाश के ऊपर एक आवरण है उसको ये प्राणायाम नष्ट कर देता है. So that light which is there in us, which we are not aware of, Patanjali says that practicing this, that light gets manifested because that which was covering it, that covering is gone, that covering is taken off. तब मुझे जो समझ में आती है बात वो ये है कि श्वास पे कंट्रोल या उस पे नियमित रूप से कंसंट्रेट करना इतना सरल तो नहीं है. मेंटल हाईजैकिंग इतनी तगड़ी होती है, आप 1 मिनट भी नहीं कर सकते हैं. I'm actually challenging you for 1 minute. You sit for and put up a stopwatch and do it for 1 minute and you will see that you have got hijacked in between. कहाँ से माया आकर के हमको उठा के लेके जाती है, ये बहुत कठिन होता है कह पाना. और हमको लगता है कि एक प्रकार का मेडिटेशन ये कहा जाता है that you watch your watch, look at your seconds, जो सेकंड की सुई होती है ना, look at that and be with it just for 1 minute. और ये हम ना ट्रेनिंग में किया करते थे and trust me 10 सेकंड used to be the maximum. 10 सेकंड बाद हाईजैकिंग लेटेस्ट हो ही जाती थी. इतना कठिन होता है मन को वहां पे लेके आना जहां वो प्राणायाम में नियमित हो सके. अभी तो प्राणायाम वो कर ही नहीं पाता, नियमित क्या होगा. अचानक से ये बहुत जो फंडामेंटल प्राणायाम है अनुलोम विलोम, उसको भी करते करते वो मैकेनिकल हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हम कहीं किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं और यहाँ जो कार्य चल रहा है उसमें हम होते ही नहीं है, वो पूरी तरीके से मैकेनिकल हो जाता है. So not an easy job only when one does it, and hence I will not refute or doubt Patanjali when he says that when you do this
then the light which has been veiled that gets unveiled. क्योंकि ये करने में हम किन बातों की डिस्कवरी करेंगे हमें भी नहीं पता. हमारे भीतर के कौन कौन से सबकॉन्शियस तल खुलेंगे अवचेतन मन के, हमको वो भी नहीं पता. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बट डिमांड्स, और ये ना बहुत बोरिंग भी होता है. पीपल गेट बोर्ड डूइंग इट लाइक क्रेजी. एक कुछ सेकंड में इतनी बोरियत आ जाती है. यू विल सी पीपल yawning and hijacking has already happened. आप करके देखिए और मुझे बताइए. शेयर इन द ग्रुप हाउ इट इज फॉर यू. और उसके बाद अष्टांग योग के, हाँ विद्या बोलिए. I have to just share something in regards to pranayam. प्राणायाम में ऐसी भी टेक्निक्स होती हैं जिसे breath works की टेक्निक्स के थ्रू you can even go so deep when you are in that process that you can experience when you were born out of your mother's womb. So that's how much it has the power, and it actually is very good for your traumas and everything, but you have to do it under very known people, like who are certified to hold that space for you and guide you through that. So it's a very strong practice if you go deeper into it. Yes, totally agreed. It is like that, but to be able to reach that level is not a joke. So Yeah, it's पांचवें, quite difficult. it's very difficult, and then we are so consumed by the world. हमारे पास इतने काम होते हैं संसार से जुड़े हुए. आप प्राणायाम करने बैठिए और देखिए संसार कैसे आपको याद आता है. ये काम रह गया, वो काम रह गया, अरे इसको फोन करना था, उसको मैसेज करना था, ये लिख लेते हैं, ये भूल जाएंगे, ये लाना है, इसका लिस्ट बना लेते हैं. 1000 things you will remember. 53rd में कहते हैं पतंजलि, धारणासु च योग्यता मनसः. अब वो धारणा पर आ गए हैं. यम नियम आसन प्राणायाम धारणा. तब मन में धारणा शक्ति की योग्यता आती है. धारणासु च योग्यता मनसः, मन में धारणा की योग्यता आती है. जैसा कि हम शुरू में भी देख रहे थे, प्राणायाम तक हम करते हैं और धारणा की योग्यता प्राणायाम सफलता पूर्वक करने के पश्चात आती है. तो धारण क्या करना है? अब फिर कृष्ण की को याद कीजिए, धार्यते इति धर्म. धारण क्या करना है? वही जो धारण करने योग्य है, अर्थात जो धर्म है वो ही धारण करना होता है. धारण करना इज, जो ध शब्द है ना, जो ध धातु है, उसका जो बीज उच्चारण है, जो उसका साउंड है, उसका अर्थ होता है टू क्लिंग टू. ध वर्ड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लिंगिंग. धरना, धारणा, धरती, that which holds us, all that starts, all the words that has got dha in it has got some property of holding. So when we are successfully able to get into pranayam, then our mind gets the ability, or जिसको हम योग्यता कहते हैं, qualification of what? धारणा शक्ति. उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी हमारे अंदर आती है. तो इतना सरल नहीं होता है धर्म को हर क्षण धारण करके रखना. धर्म से भटकना बहुत आसान होता है, और इसीलिए for all those people who are doers and who can't stop without but do, they just can't be. For them, Patanjali has given a series of meditative techniques
He has given us good yam and niyam to do. And if you look at all of that, your mind will be so occupied in taking care of all those things that you will automatically get disconnected with the world. You cannot practice all that being heavily connected and attached. And disconnected doesn't mean that you stop living in the world. It simply means that you are no more attached to the world. The world is not conquering your mind. Your mind is not being held by world throughout. That should not happen. And when we are able to do all that, then धारण शक्ति की योग्यता आती है. Now mind is in a status wherein it can actually start move towards adhyatma. Notice that by now the body and the mind both have been deconditioned bolenge, conditioned bolenge, I don't know the word, but they both have been जिसको घिसना कहते हैं, तपना कहते हैं, कि सोने से इम्प्योरिटी निकालना है तो उसको आग में झुलसना ही पड़ेगा. So both the body and mind have been trained in a way. Yes, Vidya. Thank you for the word. They have been trained in a way that now it can move towards dharana. In 54th Sutra, Swavishaya Samprayoge Chitta Swarupanukkar Ivendriyanam Pratyahara. And now he is talking of Pratyahara. जब इंद्रियां अपने अपने विषयों का त्याग करके चित्त का स्वरूप ग्रहण करती हैं, तब उसे प्रत्याहार कहते हैं. इंद्रियों के विषय क्या हैं? We all know. Eyes love to see and ear love to hear music. Of course, we have our own qualification of what I like to see and what I do not like to see, what I find beautiful and what I find ugly. And similarly with the sound, with the taste, with the touch, with the smell, we all have classification of this is good and this is bad. And now Patanjali is saying that when you come to dharana, then the sense objects, they can be dropped by the sense organs. और इसको ना कछुए के बिहेवियर के साथ बहुत संबोधित किया जाता है. कहते हैं कि जिस प्रकार सामने मुसीबत देख करके कछुआ अपने पूरे शरीर को अपने शेल के अंदर सिकोड़ देता है, और जिसे कछुए की बहुत अच्छी पहचान ना हो, उसे लगेगा कि वहां कोई पत्थर रखा हुआ है. ठीक उसी प्रकार संसार को देख करके हम अपनी इंद्रियों को जब अंदर सिकोड़ देते हैं, अर्थात संसार से कट ऑफ कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखें देख नहीं पा रही, हमारे कान सुन नहीं पा रहे. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे आंख देखते हैं किंतु प्रभावित नहीं होते, सुनते हैं किंतु प्रभावित नहीं होते. We are not in the grip. उस सिकोड़ने को, संसार को देख करके प्रत्याहार कहा जाता है. So if one has been able to follow the yam niyam and has done taken so much of effort of finding the right posture for themselves, the asana and the pranayama, then dharana and pratyahara, they are easier said than easier. Otherwise, if one wants to go to directly pratyahara, you might feel at one moment that oh wow, I have done it. And the next moment you are pulled into it. You are pulled into the world. Very easy, very, very easy. So one moment you think that, wow, I am so disconnected. I can watch the world.
I am the witness. It is so much of fun. And the next moment, you see that this world is actually entering you. And this idea that I've been able to disconnect myself from the world is actually a very subtle connection with the world. On the gross level, it feels as if I am disconnected, but on the subtle level, the connection has become even stronger. So that is when pratyahara is so important, to be consciously able to bring your sense organs back by dropping the objects of the sense organs. और ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, that is topmost hypnotism of the sense organs. When you pull your sense organs within, then your sense organs, which were so attached to all that and were hypnotized by the object outside, they start coming to the internal world. And this exactly is what is meant by ये ना अध्यात्म जो है, एक बार इसका ना वो स्वाद लग जाना चाहिए, उसके बाद ये छोड़ता नहीं है। एक बार स्वाद लग गया, आप देखेंगे कि आप कुछ क्षण के लिए शायद सांसारिक जीवन में जाकर के खुश हैं, प्रसन्नचित हैं, मजा आ रहा है, मजे लूट रहे हैं, लेकिन अचानक से आप कुछ ऐसे के प्रति सजग हो जाएंगे. यू विल रादर नोटिस समथिंग इन यू which is very sad, which has exceptional void, the feeling of void in it. And that is the hypnotism. So despite the fact that the world is all available, all present, the sense organs are hypnotized by the internal world. They say that the internal world is such a bigger world. External world उसके आगे छोटा है, बहुत छोटा है. विवेकानंद मेडिटेशन में बैठते थे तो कई कहानियां हैं. रामकृष्ण बैठते थे तो कई कहानियां हैं. They would not come out for hours. They are so soaked in themselves. What's happening within we do not know. हम बाहर से कुछ नहीं कह सकते. But there definitely is something which is so precious, so beautiful, that it pulls one inside. And that is what pratyahara does. When the sense organs are not obsessed with the external world, they are not engaged with the external world, they start to pay attention to the inner world. And then such things manifest which actually will rather look as bigger maya, but very difficult to comment. जैसे कि there is a difference between vision and dream. In the world of spirituality, there is a difference between vision and dream. Dream is something that we project. I dream my future to be like this. I am doing this and it should result in this. And then this is what it will give me. This will be my status, blah, blah. Vision is something that comes to you. You do not think about it. Your thought cannot go there. So you can't force it to happen. It just happens to you. That is vision. So once absorbed in oneself, vision is what starts to happen. And that's what is hypnotism of the sense organ. ड्रीम को भी हम कॉन्क्रीट कर सकते हैं. जो पूरा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना आभा,
वो ड्रीम बेस्ड ही है. You think of something that you want to manifest. You make it very real. Bring in all the colors. You use all the senses. उसमें वो आप वो आवाजें सुनिए जो उस स्थिति में आपको सुनाई देंगी. वो सब कुछ देखिए. लोग कैसे आपको अपलॉड कर रहे हैं. आप कहाँ हैं. आपने कैसे कपड़े पहने हैं. आप कैसा महसूस कर रहे हैं. You start feeling all that also. How are you in that situation? What are you wearing? How do you see yourself? All that is dream. Vision is something maybe you're sitting in a void and it just comes in and you have no clue why it has come. You can't relate to it why it has come. So when these sense organs are pulled within, visions start to happen. That is a very hypnotic journey. Because a lot of vision will also happen by opening your subconscious level. It will be a lot of cleansing of your internal. आपको याद होगा हमने स्वप्न के बारे में बात किया था जिसमें ओशो के विषय में मैंने जिक्र किया था. And I had said that he was talking of 5 kinds of dream. One dream is just a blah blah, this thing, blabbering of mind. And then he goes to the 5th kind of dream. Let me just check if I am able to figure that out. And in the 5th dream, he said that you get in touch with your वो मैं आपको निकाल के बता दूंगी कहां पर था. समाधि पाद में ही था पहले वाले भाग में. That is very interesting. Osho says that in the 5th type of dream, which is very durlabh, it doesn't happen so easily. I got it. Mm-hmm. 38वां सूत्र था समाधि पाद का जिसमें पतंजलि कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा. स्वप्न में जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है अथवा सुषुप्ति में जो सुख प्राप्त होता है उसका ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता है. और तब हमने थोड़ा सा ड्रीम को देखने की कोशिश की थी जिसमें पतंजलि 5 तरह के स्वप्नों की बात करते हैं. पहला तो वो कहते हैं कि आपका मेंटल जिब्रिश है, वो जो रबिश है, आप जो दिन भर सोचते रहते हो वही आपको दिखता है. दैट इज व्हाट यू प्रोजेक्ट इन योर ड्रीम. The second kind of dream, he says, is a dream wherein you just fulfill your wish. What I could not do in my waking hours, I fulfill all those when I'm sleeping. The third kind of dream is communication from superconsciousness. So this happens when, because of certain practices, alertness starts to seep in our entire system. So the mind and body is even alert while sleeping. The 4th dream that he talked of is the one that comes from the past lives, which is all the conditioning, the deeper conditioning that we have and which we are not aware of right now, what we are carrying, what imprints are we carrying right now. So that's the 4th kind of dream. And the 5th kind of dream, which he says is very rare, is the 4th is coming from the past life, the 5th comes from the future, what can happen. And I was reading a book in which there was a very interesting, उसी दौरान I was reading a book called Fakir, and उसमें ये connotation था कि आप, because you are on spiritual journey and you are on it in a very with lot of speed, so a lot of karma that you are supposed to go through, that is taken care of in your dream. So you go through that process in your dream. So it doesn't happen, because how do we, in exactly the same way that we call dream as dream, how do we know that this is not the dream, what we call as a reality?
We call it reality based on certain things because we believe that we are not asleep right now. But the knowers have said that जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद तुरिया है. आपको कैसे पता कि जिसको आप जागृत कहते हैं उसमें आप वाकई जगे हुए हैं? और आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारा कुछ तो प्रोजेक्शन ही है ना. ये तो हमने कई बार देखा है. तो स्वप्न में वो कार्य वो कर्म पूरे हो जाते हैं, वो पूरे किए जाते हैं. दिस हैपेंस व्हेन देयर इज ग्रेस ऑफ गुरु. This happens when there is grace of Guru. So that you are able to move beyond the karma phal, this karya karan, this chakra faster. That is also one way of doing it. So when you go into tantra, there are a lot of stuff that comes into picture. Same here in when you will read Raja Yoga by Vivekananda, he has also talked of a lot of such stuff that can be done. It is just that this is a different path altogether. This is not the Gyan mark. This is not the mark of the Upanishad. This is the mark of the doers or the meditation, the path of meditation, Dhyana mark. So there is a lot of things. It depends upon how you want to progress. It's like route to Delhi are many. I might be in Jaipur, but route to Delhi are many. Which route do I take? Based on my situation, my possibilities, my external situations, everything, my internal makeup. I might be frightened boarding a flight. I do not take that route. I do not resonate with that route. I might not be okay with taking a bus because maybe I vomit. A lot of people are not comfortable with bus. So I might not take that route. I don't resonate with that. Which route do I take? Based on that, there will be a lot of permutation combination, and every route has many things to offer. Yes, Abha, that is what is meant. You settle a part of your karma through dream. You go through that karma in your dream and it gets settled. But then that demands grace of Guru and of course certain sadhana. This also happens a lot to those who are very strong in bhakti yoga. Then you have the grace of the Lord. So when Ramakrishna would go to Kali and talk to her, who has seen Kali? You know, but she was very real for him. And Ramakrishna also is the one who had said so many times that जिसको तुम राम और कृष्ण के रूप में पूजते हो, जानते हो, वो ही राम कृष्ण बन करके इस धरती पर आया है. He has been known to have said this umpteen number of times. So there is a lot of things. It is again about, and Dhyana Yoga is totally practice. आप पूरा पतंजलि योग सूत्र पढ़ जाएं और आपने मेडिटेशन में 1 इंच भी प्रोग्रेस नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा. यू आर एट 0. ज्ञान मार्ग में आप जब सुनते हैं और उस सुनने में बहुत कुछ घटित होता है. जब नानक कहते हैं कि सुनना आपको पार ले जा सकता है. Listening has such capability that it can take you beyond. But then the quality of listening has to be such. The quality of listening has to be such wherein the listener is no more there. There is just listening. So then it can take you beyond. So, Gyan Marg mein, diagnosis is the cure. If you have known the problem, again picking up the same example, that if you know that what you are holding in your hand is stones and not precious diamonds,
You will not need any effort to drop them. You will not think, should I hold them? Should I drop them? Dropping will happen spontaneously just by the sheer knowledge that it is not that precious stone which I felt it to be or I believed it to be. So knowing is the cure. That is what happens in Jnana Marg. But here it is a lot about the process. So we are done with the sadhan pad. 55th श्लोक, प्रत्याहार से इंद्रियां संपूर्ण रूप से वशीभूत हो जाती हैं, and that is. Then अध्याय 3rd, विभूति पाद, which we will start from the next session. Now not much is left. Vibhuti Pad has got, it has got 56 sutra. And then the 4th is Kaivalya Pad. सब करने के बाद प्राप्ति होती है कैवल्य की, जो हमारा फाइनल ध्येय है. उसमें that is 33 सूत्र हैं. Let me take a pause. Anybody has anything to say, ask, share? कुछ लोगों को इंट्यूटिव ड्रीम्स भी आते हैं ना, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? लाइक सम पीपल एक्चुअली सी कि क्या होने वाला है. दिस इज, मेरी नानी जी को ये बहुत होता है, लाइक शुभ अशुभ सब जो भी अच्छा बुरा होने वाला है, शी काइंड ऑफ गेट्स दैट विजन, या फिर क्या बोलेंगे उसको, ड्रीम बोलेंगे या विजन बोलेंगे. द लाइन इज वेरी ब्लर हियर. Some part of superconscious she is able to access. See everything. आप समय क्या है? समय एक मिथ्या है. Everything that is happening right now has already happened, is already happening. Past और future जैसा तो कुछ नहीं है, वो तो mental makeup है. Past और future अभी तो है नहीं. जो समय को जानते हैं ना, वो टाइम जोन्स की बात करते हैं. हर कहीं ना कहीं ये जो अभी हो रहा है, जो हमको लगता है बीत गया या जो होने वाला है, it is already there in the ether. बहुत ही सुंदर तरीके से स्वामी सर्वप्रियानंदा बोलते हैं कि choice is there, otherwise you can't explain justice etc. Only because you can choose the right action, the possibility of justice in the society and all that can prevail. But when you go beyond, you have no choice. You actually are choiceless. अब इसको इंटरप्रेट करने वाले बहुत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे. एक चॉइसलेसनेस वो भी है जो अपने कंडीशनिंग के वशीभूत होकर के कहता है नहीं नहीं मुझे शादी तो करनी है, चॉइस किधर है? अब उसकी कंडीशनिंग है हार्मोन में घुसे रहना, तो उसी में घुसे रहता है, तो उसको शादी तो करनी है, उसके पास चॉइस कहाँ है? एक वो स्तर का चॉइस है. सो इट इज चॉइसलेस, choice, and then again choiceless. There are these 3 levels. So जैसे कि दुर्योधन कहते हैं मुझे पता है मैं इतना बुरा हूं, ये हूं वो हूं, पर मैं ऐसा हूं, मुझे भी तो तुम्ही ने बनाया, तो मैं क्या करूं? कृष्ण से कहते हैं मैं ऐसा हूं तो तुम्ही ने तो बनाया मुझे, तो मैं क्या करूं? मैं ऐसे ही कार्य करूंगा ना. He is at the lower level of choice. And उसके बाद चॉइस का बड़ा वैल्यू है, बिकॉज जब हम उस चॉइसलेसनेस में होते हैं ना, तो हम क्योटिक थिंकिंग में होते हैं. हमारे पास तो थॉट प्रोसेस भी नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ कंडीशनिंग होती है. हम जानवर से भी बदतर होते हैं. जानवर के पास तो सिर्फ फिजिकल कंडीशनिंग है, हमारे पास सोशल कंडीशनिंग भी होती है. तो in this regard only, I was listening to Sarvapriyananda ji, and he was talking about some experiences, saying a person came to him and he was saying that Swami ji, I saw my dog doing this, and there is so much to learn from the dog is what I felt. Even a dog can teach us so much. And then he was laughing
From God to dog, man has so many things available to him. He has religion, he has philosophy, he has science, he has literature. But look, what do we choose to learn from? Dog. इसका मतलब, and then I was pondering and I understood that इसका मतलब इतना ही है कि हम तरीके से जानवर भी नहीं हो पाए हैं कि हमको जानवर से सीखना पड़ रहा है. हम उसके भी नीचे हैं, तभी हमको उससे सीखना पड़ रहा है. इसीलिए मनुष्य कई तलों पर जानवर से भी नीचे होता है, उससे भी बदतर होता है. दैट इज वन चॉइसलेस कंडीशन. यहां से वहां आने पे जहां पर आप मनुष्य तो बन पाए, अभी ईश्वर का पता नहीं, किंतु मनुष्य तो बन पाए, वो यात्रा चॉइस की है. इसलिए चॉइस का बहुत महत्व है. और चॉइस आपको पात्रता के ऊपर काम करने की इजाजत देता है. इट इज ओनली थ्रू चॉइस दैट यू कैन वर्क ऑन योर पात्रता, योर एलिजिबिलिटी. यू प्रिपेयर योरसेल्फ, you go through all that, and that's how you earn patrata. वहां तक चॉइस है. लेकिन पात्रता अर्जित करने के बाद समर्पण का और प्रतीक्षा का बहुत बहुत वैल्यू है. और वहां पे फिर से चॉइसलेसनेस आ जाती है. That is the place where the saint dance, that whatever you give is good. जैसा तू रख, मैं वैसे रहूंगा. I am very choiceless about it. I do not question. क्योंकि मेरे ध्यान में तो वो है ही नहीं ना कि तू मुझे कैसे रखता है. मेरे ध्यान में तो ये है कि मेरे ध्यान में तू है कि नहीं. मेरे ध्यान में ये थोड़ी है कि मेरे पास खाने को कितना है, पहनने को कितना है, घर है कि नहीं, मेरे पास भक्त हैं कि नहीं, लोग हैं कि नहीं. मेरे पास तो बस एक ही ध्यान है कि मेरे ध्यान में तू है कि नहीं, मैं कहीं तेरा ध्यान करने से चूक ना जाऊं. तो फिर वो एक चॉइसलेस स्थिति होती है. और वो ही चॉइसलेस स्थिति आपको अल्टीमेट सरेंडर की तरफ लेके जाती है. दैट देन हैपेंस इफ यू कैन लिव इन दैट चॉइसलेसनेस. तो हम देखेंगे विभूति पाद में, आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग, इट कुड बी रॉन्ग, बट आई हैव अ फीलिंग कि कुछ तो उस तरह का वहां भी होगा, समथिंग. क्योंकि अंततः आप कोई भी पाथ लें, वो सब जाके कन्वर्ज करता है. You pick up Gyan Yoga, you pick up Bhakti Yoga, you pick up Dhyana Yoga, you pick up Hatha Yoga. It all converges. So I have a feeling we will find out what actually happens when we do Vibhuti path. And that's the beauty. So pick up whatever works, but pick up one and be consistent on that. Consistency is very important. थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा वो, that will never give you any result. That will not take you anywhere. That will be like spiritual shopping. हम जब इतने वैरायटी ऑफ चीजें पढ़ रहे हैं, तो उसका जो एजेंडा है वो ये है कि हम किसी एक चीज को पकड़ करके स्टॉन्च ना हो जाए. जैसा मैंने देखा है कि ये जो बुद्धिज्म वाला एक वो चलता है, आई हैव सीन पीपल बीइंग वेरी स्टक इन दैट. रिलीजन शुड गिव यू अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी. It should make you liquid. If you really get the essence, अगर आप essence तक जाएंगे तो वो आपको तरल बना देता है, बिल्कुल सहज बना देता है. Yes, ultimate freedom. क्योंकि all it does, it dissolves your ego, the I amness. हमारा वैरायटी पढ़ने का पर्पस बस इतना है, that we should know that it is not that only Bhagavad Gita is all, only Upanishad is all. No, नानक भी वही कहते थे. हाँ, आपको जो उचित लगे, और ये भी है कि मैं किसके साथ ज्यादा रेजोनेट करती हूँ, तो मैं वो पकड़ लूं.
लेकिन कभी भी अगर आप देखें कि अभी मुझे पता है, आई नो, ये भाव गहरा हो रहा है ना, तुरंत सतर्क हो जाइए। इवन इन अध्यात्म मुझे पता है। द पॉइंट इज द वर्ल्ड शुड स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो पता क्या है भाई, हमको पता जो होगा वो दुनिया के बारे में ही तो होगा ना, लोगों के बिहेवियर के बारे में होगा, मन के बारे में होगा। लेट इट ऑल डिसॉल्व। मुझे वो भी नहीं पता है, एंड दैट ऑल्सो डजंट मैटर टू मी। दैट इज ग्रेस, विद्या। Vidya is saying I've cried 3 times today in the session. That is grace. So just to remember the ultimate. और अच्छा खाना मिलता है, बड़े मजे। अच्छा खाना जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिलता तो भी बड़े मजे। हम जिसको कहते हैं कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं तो भी बड़े मजे। हम जिसको कहते हैं कि हम बेकार लग रहे हैं तो भी बड़े मजे। क्योंकि हम क्या लग रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। हमको उसका कोई ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है। We have become so कौन लग रहा है, who, किसको लगता है? That is what spirituality is supposed to do. If it is doing anything else, beware. It should make you forget who you are and yourself. मैंने ये किया, become conscious of ये मैं, जो मैंने ये किया बोल रही हूँ, ये किस मैं की बात कर रही हूँ। क्या वहां कोई करता बैठा है, डूअर बैठा है, या फिर कुछ और बात है? बात कहीं और से आ रही है, मुझे साधन बना करके आ रही है, मेरे द्वारा आ रही है। क्या बात है? ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? और ये जब होने लगता है ना, तो इट इज लाइक, इसको ही ओशो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज, अरे वो क्या वर्ड है, कॉस्मिक ऑर्गेज्म। You are in the state of orgasmic bliss throughout. That is what it is. अच्छा, एक बात बताओ, it happens a lot of times. It's easy to forget. आप कहाँ बैठे हो, आप कैसे दिख रहे हो, आप किसके बीच में हो, आपने क्या किया है, you know, like कल एक कॉन्सर्ट, इट वाज अ म्यूजिकल इवेंट, मेरी बेटी भी गा रही थी वहां पर, बहुत सारे और भी बच्चे। तो व्हेन आई वेंट, ब्रेक था, वेंट टू द बाथरूम, तब हैपन टू सी इन द मिरर एंड दैट्स, अच्छा ये पहना है, ऐसी दिख रही हूँ, oh my hair is so much gray and all that, just happened in the mirror, but wasn't aware of it. But this is like enjoying the moment, है ना? वो वहां पर जो एक्टिविटी हो रही थी वो एंजॉय कर रहे हैं, but this can't be considered as uh, being aware of the cosmic reality. It's not the same, isn't it? इसमें कॉस्मिक रियलिटी क्या है? हाँ, वही मतलब, इट्स नॉट कि आप भक्ति में तल्लीन हो गए हो, ऐसा नहीं है। जो कर रहे हो उसमें आप आपकी डूब गए बेटी उस हो एंड यू हैव कॉन्सर्ट में फॉरगॉटन नहीं योरसेल्फ। होती, आभा। नॉट ऑलवेज फॉरगेटिंग योरसेल्फ मींस कि भगवान में बस गए हो, आभा, राइट? दीज आर स्टिल टू आप डिफरेंट थिंग्स। आपकी बेटी उस कॉन्सर्ट में नहीं होती तो आप जाते? Yeah, perhaps no. Correct. That answers. Mm-hmm. हाँ, ये भी एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, that you start with a motive and the motive gets dropped. That is also fine. It's okay. हम जैसे हैं, हमारी शुरुआत तो मोटिव से ही होती है।
किसी desire से ही होती है. So you begin with a motive and the motive gets dropped. That is also good. That is also very beautiful. मतलब मेरा ये कहना है कि some of us are already, I don't know, would we call it we are at halfway? I don't know whether we will or not, but not being always conscious of how you look, how you speak, what you're wearing. 24 घंटे आप मिरर नहीं देख रहे हो, लिपस्टिक नहीं ठीक कर रहे हो, बट उसका ये मतलब है कि आप स्पिरिचुअल हो गए हो? नहीं ना. Some of us are 24 generally घंटे careless also. 24 घंटे आपको इस बात का ध्यान इसलिए नहीं रहता है क्योंकि अभी उस वक्त आपको कोई जज करने वाला नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हो. उन स्थानों पर जाइए जहां पर आप कैसे दिखते हो उसका कुछ महत्व है, और वहां पर आप कैसे दिखते हो इससे दूर हो जाइए, फिर कुछ बात बनेगी. Getting the point? 24 hours when I'm at my home, I can be free of the fact that how I look, because it doesn't matter. These people see me throughout. इनके सामने मैं भी कैसे दिखती हूँ, उसका क्या इमेज बनाऊं? It is immaterial. They have seen me when I had my running nose. They have seen me when I was suffering with upset stomach. They have seen me with my pale face. तो 24 घंटे तो उसका ध्यान वैसे भी नहीं रहेगा. उन स्थानों पर जहां पर शरीर की कुछ कीमत है, आप कैसे दिखते हो, बेस्ड ऑन दैट कई लोग हमसे बात करने आते हैं. Otherwise people don't even come to talk to us. People immediately get to have image कि कैसी है, किस तरह के कपड़े पहन के आई है, कैसा मेकअप किया है. There is nothing to appreciate. You have no shades of lipsticks, you have nothing eyeliner, blah blah, and you still can be okay. तब कुछ बात बन रही है. नहीं वो है, बट फिर भी मैं उसको भक्ति नहीं, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आध्यात्मिक हो गए हो, है ना. यू जस्ट डोंट केयर अबाउट सोशल सेटअप एंड हु थिंक्स. आपको जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता है. That is like to be able to see false in false. That definitely is a step towards spirituality. That definitely is a step towards spirituality when you are not bothered about, because it is allowing you to be little free from I am the body. Okay. It is allowing you to be little free from I am the body. So it's a great thing. Now how it goes ahead, then that matters. हाँ विद्या बताइए. Something came in my mind when you are saying that, Abha. It's like, in a way, you tell your kids you have to go do that play on the stage. You send them up there and you tell them, do your best, and your kids stop. So it's just like we are part of this kind of whole, if you look at it, the larger magnitude, we are playing our parts, even though we are spiritual. It comes in your mind and within. So when you stop doing things just because you're spiritual, you're doing with the wrong intention. Whereas it took me a while, that means I'm going to go out there and do everything and keep myself separate from it at the same time. I don't know if I make any sense. It's like, okay, if I have to go play on the stage, I'm going to do my best. I'm going to do my 100%. But I'm not going to get affected by the result, whether people clap, not clap, criticize it, or do whatever. So I look at it in that analogy now, whereas before there was a lot more judgment, but now there's no judgment because you just go out there and live and participate and just sing a song. That's it. Do I make sense? The witnessing mode always stays on. You are able to create a separation between the one who is operating and the one who is watching. So the watcher mode is Exactly. Yes, the observer is going to be there. When the awareness is there, the observer is there. And the second you get indulged into it, they both disappear because you're just involved
in there in a different way, more like a worldly way. And as long as you have the awareness and you're observing and you're participating, then I think it's all good. Okay. Anything else, or can we close? I think we are 30 minutes over already. But yeah, So then, हमारा बस चलता तो चलता ही रहता, but I know everyone has time constraints, so we can go. all this that we talk of has to come into our practice. We have to live it. Then it makes sense. ऐसे बातें करते रहेंगे. Remember this, that हम जैसे हैं, हमारा वातावरण हमें बहुत प्रभावित करता है. So through such a close group, we create an environment for ourselves which help us from slipping. You will see that if you have stopped coming to these sessions, initially it will not impact you, but slowly you will slip very fast. You will see that. You are giving yourself an environment which is a reminder for you. हम कह रहे थे ना, हम याद कैसे रखें. ये याद रखने की एक प्रक्रिया है. A way to remember. But we have to also go and cross check ourselves how we are improving. And शरीर है तब तक कर्म तो रहेंगे ही. कर्म से तो आप भाग सकते नहीं हो. तीनों गुण हैं, इंटरप्ले चलेगा. चलिए, so let's close the session. Sit straight, take a deep breath. You can chant along with me, or you can just be with it. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone.